Now this is the question number 10 from 2023 midterm morning session paper, and this question comes under the topic input output function in Python. So in this particular question it has been asked what is the return type of the input function. So basically it is asking कि जब भी आप input function लिखते हो उसके अंदर जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है वो उसका डाटा टाइप क्या है. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिंग. ओके, जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो उसके अंदर कुछ भी जो रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट, दैट ऑब्जेक्ट इज ऑफ स्ट्रिंग डाटा टाइप. इफ यू विश यू कैन रन दिस वन ऑन आईडी एज वेल. यू विल सी कि जो फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, एक इनपुट ले लिया तो इनपुट करके क्या करा आपने, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया. नाउ इफ यू ट्राई टू चेक इस इनपुट का डाटा टाइप क्या है तो यू विल सी कि डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग. नाउ आई हैव एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर यू. नाउ यू नीड टू टेल मी कि स्ट्रिंग ही ऐसा डाटा टाइप क्यों है जो इनपुट फंक्शन के लिए असाइन किया गया. Moreover, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay then, thanks for your time.